वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लस्टर। आज की वीडियो होने वाली है इस प्यारे से मेकअप लुक पे। आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि ये इंडियन फंक्शन पार्टी इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। अगर आपको कोई भी फंक्शन है, कोई भी इंडियन पार्टी है, तो आप उस पे ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मल पार्टी है तब भी, मतलब कि कोई छोटा सा फंक्शन है तब भी, कोई बड़ा फंक्शन है तब भी यू कैन क्रिएट दिस लुक। सो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे निक्स डोई फिनिश सेटिंग स्प्रे। ओके, टू मेक आवर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। आफ्टर दैट इसे हम थोड़ा सेटल इन होने देते हैं अपनी स्किन में। आफ्टर दैट आई एम गोना अप्लाई दिस Maybelline Fit Me primer. It's for dewy plus smooth normal to dry primer with vitamin E. Here जहाँ पे आई फेल्ट लाइक कि हाँ मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। सो आफ्टर दैट इसे हम अपनी स्किन में क्या कर लेंगे, सिंकिंग। बाकी ऑल ओवर योर फेस एंड नेक। हम अब जो आपने प्राइमर अप्लाई किया उसे भी थोड़ा सिंक इन होने देंगे अपनी स्किन में। सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई Colorbar Spotlight illuminating lotion. This is how it looks like. It's visible, right? And इसकी पैकेजिंग, like you have to rotate, okay, you have to just rotate it like this and pump बाहर आ जाएगा। and it's so fascinating for me. so मैं इसका इतना प्रोडक्ट ले रही हूँ। I'm gonna apply this one on my skin to get that within glow वाला feel. Okay, this inside pro concealer palette. Okay, जिनको डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है, no need to apply this orange corrector, but because I have a lot of, so I'm gonna apply this orange color corrector. I'm gonna apply on my dark circles and my pigmented areas on my face. Because I have a lot of dark circles. एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ मैं। ये आपको लग रहा होगा इतना ज़्यादा है, बट नो, फॉर मी इट्स that much of amount I needed. After that I'm gonna blend it with the blending brush. I'm using this Cups and Lashes F011 brush. This is how it looks like, something pointed. I'm gonna blend it. Okay, and same on the other side. This is how it looks like. After that, going to apply this concealer. It's a Swiss Beauty concealer and I love this concealer. बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा। So I'm gonna apply it here. जहाँ पे भी मैंने कलर करेक्टर अप्लाई किया था, on that places.
Now I'm going to blend this one again with this concealer brush. और इसी को मैं अपर आईलिड पे भी अप्लाई कर दूंगी. Now you guys can see बिल्कुल भी डार्क सर्कल नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं. अगर आपकी ज़्यादा डार्क सर्कल है ओनली देन यू हैव टू अप्लाई दिस ऑरेंज कलर करेक्टर, अदरवाइज कंसीलर से भी काम चल जाएगा आपका. एंड नाउ यू गाइस कैन सी कि मेरा स्किन और जो मेरे नेक का कलर है वो कोई भी डिफरेंट नहीं है. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ मामाअर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन. और मैं कोई भी हाई कवरेज वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई नॉर्मल फंक्शन हो और हम इतना हाई कवरेज. मैं वैसे भी बहुत रेयर हाई कवरेज प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाती हूँ, सो दैट्स वाई. और ये हम सिर्फ नॉर्मली कोई भी नॉर्मल अगर इंडियन फंक्शन है उसके लिए मेकअप कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक कि इतनी नीड है आपको कि आप हाई कवरेज फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करें. बट इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई, इट्स अप टू यू. सो foundation with the help of this beauty blender, and it's from PAC, and I love this beauty blender. Literally I'm using it the second time today, and I love this product. Sorry, this beauty blender. I'm going to use this Lakme 9 to 5 compact powder. It's a primer plus matte powder foundation. Take the brush, swirl it in the and under my eyes I'm gonna apply this. क्योंकि सबसे जल्दी जो क्रीज होता है मेकअप वो अंडर आईज में होता है मेरे, एंड अराउंड द माउथ एरिया. एक ऐसे स्ट्रोक सा लूँगा, डस्ट दी एक्सेस, एंड और पूरे फेस पे से ऐसे स्वेल करूँगा. दैट्स इट. मेक माई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग. सारा मेकअप क्या कर लेंगे हम, सील इन कर देंगे. नेक्स्ट का सेटिंग स्प्रे. ओके सॉरी, क्या हो रहा है. ओके ये क्यों स्प्रे किया है दोबारा कि जो आपका बेस है वो अच्छे से क्या हो जाए, फिक्स हो जाए. फिल इन करेंगे अपनी आईब्रोज को. आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट प्रो किट. आई एम गोना टेक दिस ब्राउन शेड, बोथ द ब्राउन शेड्स, मिक्स इट एंड टैप द एक्सेस. सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को कॉम्बिन कर लूँगा like this. Now और जो भी गैप्स है उन्हें क्या कर देंगे, हम फिल इन कर लेंगे. कॉम and this is how my eyebrows looks like. Nykaa eyeshadow palette, smoky at 8. So
I'm going to use this palette for the very first time. देखते हैं कैसा प्रोडक्ट वर्क करता है. काफ़ी ब्रश दिस शेड to apply it on my crease. Tap the excess and हम इसे crease में apply करेंगे. यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर से यहाँ तक. सिर्फ जो सेंटर आईलिड है उस पे हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे. टेक दिस ब्राउन शेड और मैं सेम जहाँ पे मैंने प्रीवियस जो शेड था वो अप्लाई किया था वहीं पे इसे भी अप्लाई करूँगी, बट विद द लाइट हैंड. बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना, बस दैट्स इट. स्वर्ल करना है उसको उसके साथ लाइक दिस वन. एंड आई एम गोना टेक दिस शेड कि जो हमारी आउटर लिड है ना वहां पे थोड़ा सा बस डेप्थ आ जाए. तो दैट्स इट. Now you can make a difference. That's it. Now I'm going, with the help of my finger, I'm going to take this bronze kind of shade. I'm gonna apply on my center eyelid. Of this clean brush, I'm going to blend all the look with each other. And that's it. So I guess जो ऐसा आई मेकअप लुक होता है ना वो हर किसी के हर ड्रेस के साथ हर ओकेजन के साथ चला जाता है. आई फेल्ट लाइक दैट वे. सो आप इसे किसी भी फंक्शन के लिए क्या कर सकते हो, इंडियन फंक्शन के लिए क्रिएट कर सकते हो इजीली. माई आई शेडोज आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आईलाइनर. इट्स फ्रॉम मेबेलिन द कलोसल बोल्ड लाइनर. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ line. That's it. That's it. Mascara, I'm gonna use a Falsies Lash Lift Maybelline New York mascara. I'm gonna use this the very first time today. Can you see a difference? I'm genuinely saying this mascara is literally awesome. This e.l.f. blusher and highlighter duo. इसी का ब्लश और इसी का हाइलाइटर I'm gonna apply. I'm gonna take this brush. It's again from Cuffs and Lashes. Just tap the excess and
It's a very neutral kind of a blush, like highlighter, क्योंकि ये ज़्यादा बैम बैम वाला हाइलाइटर नहीं है, सटल सा है, so that's why. And on my bridge of nose, sorry, tip of nose, chin, forehead. Again, I'm going to apply this NYX का setting spray to lock my all the makeup products. It. अब जितने भी प्रोडक्ट्स, पाउडर प्रोडक्ट्स हैं, वो मेरे फेस में अच्छे से मेल्ट इन कर जाएंगे. अब ऐसा नहीं लगेगा कुछ अलग लगा लिया. एक फ्लश ऑफ कलर भी आ गया मेरे चिक्स पे, बट इट डज नॉट लुक लाइक बहुत ज़्यादा कुछ मैंने अप्लाई किया हुआ है. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक. इट्स इन द शेड टॉप मोर टॉप. इट्स फ्रॉम द Maybelline one. To apply this one. I'm going to apply both these shade on my lower lash line. I already apply a mascara, so I'm quite nervous. This is how my makeup looks like. बहुत ही सटल, बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक, जो कि आप किसी भी ओकेजन, किसी भी फेस्टिवल के लिए, इंडियन फेस्टिवल, इंडियन फंक्शन, पार्टी, कहीं के लिए भी कर सकते हो. सो अब मैं मिलती हूँ आपको अच्छी तरह से रेडी. सो दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक. सो दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक. सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने आसपास वालों को खुश रखिए. सो ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.